गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम टू अड्डा 247 ओपीएससी। तो तुम जान आम डेली कौन हो मॉर्निंग 8 रे कौन कर करेन्ट अफेयर डिस्कसन करुचे। एबे आम गोटे नुआ आम ए फीचर ऐड करवा कौन जो भी टॉपिक मु डिस्कसन करी आई विल गिव 5 to 10 सेकेंड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, तो जहाँ भी जो टॉपिक हम डिस्कसन करिया 5 to 10 सेकेंड देवी तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीकि पॉइंट लिखिबो। ओके चैट रे। ओके आई विल आल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके ठीक अछि, चल जीवा चलो देखिबा आज कोन हेले हमर टॉपिक्स अछि इंपोर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज पिलाने ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन बार बार आछि। ओके प्रीवियसली मु डिस्कशन करथिली 1 or 2 days बैक। ओके सेठी भी ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन ऊपर गोटे आर्टिकल आस्थिला। ओके बारंबार आछि तो इंपोर्टेंट वाइटल फॉर मेंस। अनदर वन इज अबाउट एमएसपी। ओके तुम जानिछो एग्रीकल्चर सिलेबस रे अछि जीएस3। ओके एमएसपी टा सबले ट्रेंडिंग टॉपिक थाए यूपीएससी हो किमा ओपीएससी हो से पर्सपेक्टिव रे सबले क्वेश्चन आसी आइदर एमएसपी रो बेनिफिट्स कोन व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग एमएसपी एंड अनदर थिंग इज वेदर गवर्नमेंट शुड मेक एमएसपी लीगलाइज करिया दरकार की we are going to discuss। ओके जहाँ भी डिस्कशन करते ना मैक्सिमम जिनस तुम मेन्स रिलेटेड ही। ओके तुम देखो माने क्लासेस जेते तुम अटेंड कर जीवो इंटरलिंकिंग तुम बढ़ो प्लस इंटरलिंकिंग बढ़िया सहित तुम कौन हम बहुत सारा पॉइंट तुम जेनेरेट कर पार। ठीक अच्छे। एंड थर्ड आर्टिकल इज अबाउट इंडस वैली स्क्रिप्ट। फोर्थ वन इज अबाउट यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन। मुझे जहाँ भी नौ दैट इज टोटली रिलेटेड टू योर मेन टॉपिक आ ट्रेंडिंग थी आलतू फालतू टॉपिक किसी नहीं। जदि यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 भी आम नहीं पिकअप करें टॉपिक टाकू ताकू आम कौटी यूटिलाइज करवा से सब कहे वीडियोटा फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखले तुम इंटरलिंकिंग पाई परिबो। ओके नेक्स्ट इज उमृद पाउनी कराखंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीज आर द 5 टॉपिक्स फॉर टुडे। ओके तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अबाउट प्ले ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन रे कौन पाई देखिबा टॉपिक इंपोर्टेंट कौन पाई कॉन्टेक्स्ट आसी। ओके फर्स्ट वन इज कौन रिसेंट रिपोर्ट बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रो रिसेंट रिपोर्ट आसी से गोटे पॉजिटिव ट्रेंड आसी। कौन पॉजिटिव ट्रेंड आसी पिला माने ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ी आ एक्सट्रैक्शन टा कमी। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन बढ़ी एक्सट्रैक्शन टा कौन अछि कमी। गुड मॉर्निंग। ताले आमे बर्तमान डिस्कशन करिया जिबा व्हाट आर द बेसिक कॉजेस व्हाई वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। कौन एमती कौन होची व्हाट आर द कॉजेस। ओके व्हाट आर द कॉजेस फॉर दैट वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। कॉजेस कौन एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर व्हाट आर द इश्यूज व्हाट विल द इम्पैक्ट व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स and what are you going to do, what is the way forward in this 5 section we are going to interpret particularly these things। okay so first one is ground water conservation। okay ground water प्रथम कथा हला ground water extraction करिया को हम कहीं जा why ground water extraction but what is the reason behind ground water extraction। ground water extraction कौन पे होची इरिगेशन पर्पज फॉर इरिगेशन आम जानीचे आमर जेति भी वाटर यूज 80% कौन होची इरिगेशन पर्पज यूज होची। को पर्पज यूज होची इरिगेशन पर्पज रे 80% यूज होची कौन इरिगेशन पर्पज रे। नेक्स्ट आउ कौन हमको पानी मिलुनी बोली वाटर अवेलेबिलिटी कमुची बोली आम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करछे। काहे वाटर अवेलेबिलिटी कमुची प्रेसिपिटेशन नहीं काहे प्रेसिपिटेशन नहीं ड्यू टू इरेटिक वेदर पैटर्न एलिनो हला ड्राउट हला साइक्लोन हला इरेटिक वेदर पैटर्न बा इरेटिक मॉनसून व्हिच लीड टू चेंजिंग रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन सेति भी हम गले। नेक्स्ट आउ कोन व्हाट आर द कॉजेस फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कोन पे होची वाटर इंसेंटिव क्रॉप कल्टीवेशन। एटी आम जो राइस आ व्हीट को बर्तमान गोटे समय थिला
Before the period of Green Revolution, we are in a situation of food scarcity. आमे food scarcity रे थिले खाया को मिल नथिला. In order to provide food security to such a large number of population, for such a large populous country like India, which is the populous country in the world, we need food security, we need sufficient food. For that हम जानते MS स्वामीनाथन करो ground making कौन innovation फल रे हमें कहले ग्रीन रिवोल्यूशन आसिला. ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमें कौन कले ना मात्रा परिमाण कौन राइस और व्हीट कौन कले प्रोडक्शन कले. तो सेठी कौन होला हमरो फूड सिक्योरिटी बूस्ट होला. कौन होला फूड सिक्योरिटी बूस्ट होला. ताले जो राइस और व्हीट हम वर्तमान तुम देखिबो राइस व्हीट अधिक परिमाण प्रोडक्शन होची. दे आर कौन वाटर इंसेंटिव. ये सुनो से राइस व्हीट प्रोडक्शन करबा पई जलर बहुत आवश्यकता अछि. वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वाटर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन. बुझी पारछ. प्रथम आसला हमर कोन होची इरिगेशन, नेक्स्ट आसला इरेक्टिक मॉनसून, वाटर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन. These are the basic things. These are the primary causes. These are the primary causes for which we are doing कौन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन. आम ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन करुचे, एक्सट्रैक्शन करुचे. ये सुनो आउ कौन अच्छा आउ कौन रीजन नहीं पारे कौन पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आम कहीं पानी मिलूनी कौन पे व्हाई देयर इज लेस वाटर अवेलेबिलिटी. आम कौन करि पारने इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट. बहुत सारा जगह देखियो गाँ गहली कौन हो पाइप रु पानी बाहर तो बाहर दिन सारा ताकू कहीं बंद करार नहीं. जी आसला गाधे गला, जी आसला पानी नहीं गला, बासी को मोर कौन फरक पड़ी. लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन. जदि पानीटा बाहर कहीं गाधो ना किसी करना वी शुड इमिडिएटली स्टॉप दैट. लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन. इटा गला दीज आर द रीजन्स. व्हाट इज द इम्पैक्ट? इफ यू गो टू द इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट कौन पड़ी वाटर कंजर्वेशन जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन होची वर्तमान ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन होची. व्हाट आर द बेसिक रीजन्स? रीजन हम डिस्कशन कले. व्हाट आर द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट कौन पड़ी? नंबर 1 ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन एक्सट्रैक्शन कला पर कौन कौन इम्पैक्ट पड़ी? भूतल जलस्तर कमी होची. दैट मीन्स देयर इज वाटर स्कार्सिटी. वाटर स्कार्सिटी आसो. बर्तमान देखा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फल कौन पॉल्यूशन बढ़ुची. इंक्रीज इन कंटामिनेशन एंड पॉल्यूशन. इंक्रीज इन कंटामिनेशन एंड कौन पॉल्यूशन. थर्ड वन कौन होची ना सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होची. सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन. आ कौन होची पिला माने द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कौन लैंड सब्सिडेंस. लैंड सब्सिडेंस हम लैंड सब्सिडेंस. दीज आर द इम्पैक्ट्स. आम खाली बेनिफिट कौन पाचे राइस व्हीट प्रोडक्शन होची सेतिकी बेनिफिट पाचे. आमर दिस इज द 21st century is not about food security, it is about nutrition security. गोटे समय थिला हमहु खाइबा को मिल नथिला, आमे फूड सिक्योरिटी रे ध्यान देउतले. नाउ द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट शिफ्टेड फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कना वर्तमान देखा कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन पे आमे दिने गर्व अनुभव करथले वर्तमान दैट हैज बिकम ए डबल एज स्वॉर्ड फॉर अस. दैट हैज बिकम फाटल. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखो, हेल्थ हैजार्ड देखो, सॉइल फर्टिलिटी लॉस देखो, न्यूमरस बर्तमान लॉसेस हम सोचे. सेतिबे कहि देयर इज नीड फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 in order to mitigate these things, in order to bridge these कोन डैमेजेस. ताले हमर इंपैक्ट कोन पड़छि तुम कहली वाटर स्कार्सिटी आसीबो, इंक्रीज इन कंटामिनेशन बर्तमान पॉल्यूशन होछि. नेक्स्ट है तुमर कोन लैंड सब्सिडेंस होछि, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होछि. These are the basic impacts. गवर्नमेंट नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव कौन, नेक्स्ट आमे कौन करवा दरकार.
आम बर्तमान देखा इम्प्रूवमेंट कौन आमर नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स इंडिया रिपोर्ट जो अच्छी 2024 ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनक्रीज होते 15 BCM एक्सट्राक्शन के डिक्रीज होती 3 BCM जदि ग्राउंड वाटर स्टाटस ए डाटा सब मन रख ओके ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ी एक्सट्राक्शन डिक्रीज होती ओके ओवर एक्सप्लोटेशन कमी जी दरकार आम से एक्सप्लोट करवा ना कि अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड महात्मा गांधी कहते जानिच वाटर अच्छी खोली चल जिते खोलीच खोल कौन होमती नुह इफ देयर इज नेसेसिटी वी शुड एक्सट्रैक्ट if there is not necessity there should not be over exploitation of natural resources whether it may be water whether it may be minerals okay गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन मन रख जल शक्ति अभियान अटल भूजल योजना मिशन अमृत सरोवर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नेशनल एक्वाफेयर मैपिंग वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज कैच द रेन कैंपेन अटल भूजल योजना रू एतर प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आस्तिला क्वेश्चन अटल भूजल योजना प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आस्तिला व्हाट्स द वे फॉरवर्ड अच्छा चैलेंजेस कोन मु तुमको ऑलरेडी कहि सारची वाटर टेबल कमुची क्लाइमेट चेंज होउची ठीक अछि पॉल्यूशन ओके कंटामिनेशन बढ़ुची आर्सेनिक पॉल्यूशन वेरी माने फाटल जिनस ओवर एक्सट्रैक्शन होउची एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन अराउंड 80% हमर जो वाटर एक्सट्रैक्ट होउची इंडिया रे दैट इज फॉर इरिगेशन पर्पस नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव कहली अटल भूजल योजना कहली प्रधानमंत्री कृषि योजना कहली कैच द रेन कैंपेन कहली ऐसा नो पानी पंचायत भी प्रमोट कराउची आ कौन कर सब जिन बचापी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम्युनिटी इंडिविजुअल लेवल रे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर कौन करिया आमे ग्रेटर पॉलिसी इंटरवेंशन करवा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एआई आउ आईओटी को यूज करके कौन करिया ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग ऑप्टिमाइज रिसोर्स करिया मैनेजमेंट करिया बुझी पारछ कौन कहली ताले पॉलिसी इंटरवेंशन ने कहले कौन जहाँ भी पॉलिसी अच्छी देयर शुड बी ए डिसेंट्रलाइज पॉलिसी आम खाली पॉलिसी रखीदेला हेनी लोक मैंने से ग्राउंड लेवल जी डे टू डे बेसिस से काम इनवल्व अच्छी ग्रेटर स्टेक होल्डर कौन एंगेजमेंट स्टेक होल्डर को माने चाषी माने हेले रूरल लेवल तुम आहरी माने कौन करने माने पीआरआई सिस्टम को भी एथिरे इंक्लूड कर जाय परियो बुझा दरकार ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन एटा प्रोस अच्छे एटा कौन से एमती असुविधा होची बुझे ना नहीं नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन केते एग्जैक्टली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आम पाखे बहुत डाटा इनसफिशिएंसी अच्छी केते ग्राउंड वाटर एग्जैक्टली एक्सट्रैक्शन कराउची केते लॉसेस होची केते लैक ऑफ डाटा को मॉनिटर करया पई आमे कोन करिया टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करिया ए कोन आईओटी तमे एटा को कौन लिखिपर कौन बेनिफिट्स ऑफ एआई ऐसे हो कि तुम जीएस रे जदि आसिला बेनिफिट्स ऑफ एआई आपको आउ कोड लिख ई गवर्नेंस इनिशिएटिव रे लिखिपर नेक्स्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट तुम कहली फोस्टर अवेयरनेस कैंपेन एंड इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव नेक्स्ट लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एनकरेज द यूज ऑफ कौन सरफेस वाटर एंड रेन वाटर टू कॉम्प्लीमेंट ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस कौन डिपेंडेंसी तुमको एवं कहली आम सब ट्राए करा कौन सरफेस वाटर को यूज करने रेन वाटर कंजर्वेशन करवा जहाँफल आम ग्राउंड वाटर आमको कम एक्सट्राक्शन कराया पड़ो केतेटा घरे देख वर्षा होती पानी बाहरी जाए केतेटा घरे रेन वाटर कंजर्वेशन हो लोक कहले लोक कहे पागल बोझ बोली से अमाउंट अवेयरनेस लोक पाखे ना लोक आम वाटर तो अच्छी सरबनी के आम जिते यूज करूँ मन इच्छा बासन बजाई 10 बाल्टी गाधेवाई जी ये गाधोच गाधाओ ओके नेक्स्ट दिस इज इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने ओके मिनिमम सपोर्ट प्राइस आम ए दुईटा क्वेश्चन डिस्कसन करिया मेंस रिलेटेड प्रथम है एमएसपी कौन दरकार तार प्रोस कॉन्स
सेकेंड वन इज लीगलाइजिंग एमएसपी बर्तमान एमएसपी लीगलाइज होइनी लीगलाइजिंग एमएसपी कले तार बेनिफिट कौन मिलिबो आ तार कौन मिलिबो प्रथम होला मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हाट इज एमएसपी एमएसपी के डिसाइड करछन पिला माने सीएसपी कमिशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ओके तो सीएसपी डिसाइड करछन एमएसपी ओके कौन पर एटा आछि बर्तमान न्यूज रे ना लीडर के अछंती हमर फार्मर लीडर जगदीश सिंह दलवेल ओके इंडेफिनाइट फास्ट करछंती इंटरेस्ट 43 दिन पछे कोन करछन बतानो अनशन बसछंती आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी बर्तमान ऑन एग्रीकल्चर दिस इज वेरी वाइटल आकु तुम लिखि पारियो ओए फॉरवर्ड रे जेतेले एग्रीकल्चर रिलेटेड किछि भी इश्यू आसला ना ओए फॉरवर्ड लिखि पारियो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशन कोन देछि लीगली बाइंडिंग एमएसपी ओए फॉरवर्ड रे यदि ओए टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम ओए टू डबलिंग फार्मर इनकम तुम से लिखि पारियो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशन ने कोन लिखि पारियो कि कोन लीगल बाइंडिंग एमएसपी लीगली बाइंडिंग एमएसपी करिया पई कोन करती रिकमेंड करिछि आमे बर्तमान देखिबा व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कंसर्न फर्स्ट पार्ट हला एमएसपी रो इन द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लीगली बाइंडिंग यदि आमे एमएसपी को लीगली बाइंडिंग करूचे तार प्रोस कोन मिलछि आ तार कॉन्स कोन मिलछि ठीक अछि लेट्स स्टार्ट एटा तुम जानि छ एमएसपी द प्राइस एट व्हिच नो गवर्नमेंट परचेज क्रॉप काटू फार्मर मानन को ओके टू एंश्योर दैट दे डू नॉट इनकर कोन लॉस जेम तक लॉस नै हित गवर्नमेंट एटा होछ कोन गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओके एस्टैब्लिश रिकमेंडेड बाय कोन सीएसपी मु कहू तो कहि देछि ऑलरेडी तुमको कहि सारी छी ओके 23 टा क्रॉप पाई ओके पर्पस कोन प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन प्रोवाइड इनकम स्टेबिलिटी एंश्योर एग्रीकल्चरल ग्रोथ ताले एमएसपी रो बेनिफिट कोन होला बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी प्रथम कोन होला जदि हम पाखे सफिशिएंट अमाउंट रो राइस आ व्हीट प्रोडक्शन होला प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहइबो जतले हम पाखे दिनस नाही व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ एनीथिंग दिस लीड्स टू फूड इन्फ्लेशन हो तमरो प्राइस बढ़िबो जेतु हम पाखे सफिशिएंट अमाउंट राइस उठे अछि तेरे प्राइस स्टेबिलिटी रहइबो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होला आ कोन होबो जतले कंट्री पाखे मिनिमम ए दिन से राइस उठी मिलिबो हमर कोन फूड सिक्योरिटी एनहांसमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी बूस्ट हो थर्ड आउ कोन हो फार्मर इनकम कोन हो डबल हो फार्मर इनकम भी कोन हो एनहांस हो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम डबल हो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कारण आगे हमर कोन थिला कंट्री सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स आमर जेतिकी दरकार माने खाई भी बंचा पे बस सेतिकी वर्तमान जेतु फूड सिक्योरिटी बूस्ट होलानी वी हैव एनॉर्मस प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट वी आर डूइंग एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बूस्ट होची एक्सपोर्ट करछ हमें वी आर इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड राइस बासमती राइस तुम जानिछ आज के डेट रे यूएफए रे सेरा डिमांड अधिक अछि एफडीआई इनफ्लो होची हमर एफडीआई इनफ्लो होची फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ुची हमर प्रथम प्राइस स्टेबिलिटी ला फूड सिक्योरिटी बूस्ट होची फार्मर डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम होची एफडीआई आछि फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ुची इंडिया इज एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर इन द केस ऑफ कोन फूड सिक्योरिटी आमे अफ्रीकन कंट्री आज के डेट रे जो बोली पॉवर्टी अछि ताकू एलिवेट करै पे इंडिया गोटे ग्लोबल लीडर होई पारे यदि आमे राइस फूड प्रोडक्शन रे जो बोले रेट रे आगु बढ़ुचे these are the benefits we are getting due to MSP what are the cons what are the disadvantage डिसएडवांटेज कौन पाइबा एमएसपी रे प्रथम कथा ला जदि बा एमएसपी 23 टा क्रॉप पई डिक्लेयर होची इट इज टोटली स्क्रूड केवल राइस आ व्हीट बेनिफिट होसंती आउ के बेनिफिट होजन होनांती आउ के बेनिफिट होनांती स्क्रूड बेनिफिट आउ कोन वाइडनिंग रीजनल डिस्पैरिटी एमएसपी कौन होची रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ुची कहीं
ना जो राइस उट्रे सब अधिका बेनिफिट क्यों होती पंजाब हरियाणा साइड अलग साइड तक बेनिफिट होना इट एक्ट एज ए हर्डल्स इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन act as a hurdles in crop diversification कहीं कारण लोक मैंने देखुं अलग किसी कले ना से एमएस एत मिलूनी तो सी अलग किसी चाष करने जाऊना खाली राइस यूट्यूब डिपेंड कर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हवा नहबार प्रमुख कारण हूँ एमएसपी बिकज एमएसपी केवल कनसेंट्रेट होची क्या भीतर राइस व्हीट भितर अलग कौन क्रॉप एत बेनिफिट पाऊना मिलेट मिशन एवं चला व्हाई देयर इज नॉट बिफोर जदि आंकु जी पैसा मिले जब मिलेट को जी पैसा मिलता लोक मैंने छाड़ते तो गोटे सिंपल जिनस मुझे कहली मिलेट गवर्नमेंट कौन कला एवं कह मिलेट चाष कर से मिलेटा आम देखिले फूड सिक्यूरिटी आम पाखे अच्छी धान गहम से भात डाली रोषे कराऊँगी कि देखा दिन दिन कौन राइस आ व्हीट रे जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलूला जो जो कंपोनेंट विटामिन्स मिनरल थिला दैट इज गोइंग ऑन डिक्लाइन रिपोर्ट बाहर डाउन टू अर्थ मैगजीन तुम देख देयर इज रिपोर्ट गवर्नमेंट तापर कौन कला अच्छा आउ कौन करहब बर्तमान देख गवर्नमेंट कहला मिलेट कर मिलेट को आसला मिड डे मिल पिला खाइले पिला खाइ पर कौन होला आईएमआर मिड डे मिलटा बर्तमान मिड डे मिल हो कि अंगनवाड़ी केन्द्र डिस्ट्रीब्यूट कराला सेठू कौन होला आईएमआर और एमएमआर रिड्यूस होला आईएमआर एमएमआर रिड्यूस होले कौन हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बूस्ट होला डेमोग्राफिक डिविडेंड बूस्ट होले कौन क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस होला तो गवर्नमेंट जो कौन करुची गवर्नमेंट करुची एमएसपी टा जेहेतु स्क्यूड हो जाउची टू पर्टिकुलर टू क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस अदर माने किछि पाउना बेनिफिट तो तुमको लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट ऊपर कौन कर बड़ फाइनेंशियल बर्डन पड़ुछ आउ कौन होची फाइनेंशियल बर्डन ओवर प्रोडक्शन लोक कौन करेंगे मात्राधिक अधिक जिनस प्रोडक्शन करेंगे ओवर प्रोडक्शन इज कौन ओवर प्रोडक्शन फल कौन हो जान ओवर प्रोडक्शन इज ए करप्शन मु कहीं लाइन कहली तार जब बुझीपर बुझा चेष्टा कर ओवर प्रोडक्शन है कौन हो तुम जान एफसीआई गोडाउन रे टन टन रो फूड वेस्टेज हो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इज नथिंग बट ए करप्शन आज हाइलाइटेड बाय सेकेंड ईयर करप्शन कहले कौन खाली होची फाइनेंशियल सेक्टर जे मु पैसा काटी चोरी कर आनली कि मोटू पैसा ब्राइबर नेला दैट इज करप्शन नॉट एट ऑल करप्शन आल्सो इंक्लूड तमर जदी कौन होची कंट्री रिसोर्स लॉस होची रिसोर्स लॉस दैट इज आल्सो ए करप्शन मोरल करप्शन आल्सो इंक्लूड मेनी थिंग्स जदि मु भाव माने गोटे जिन करूनी कि भावुची रंग दैट इज आल्सो करप्शन दैट कैन करप्शन हैज ए एंटेंगल्ड डायमेंशन तो कार मीनिंग होची कौन कौन आम जानले प्रथम जिन एमएसपी बेनिफिट कौन प्राइस स्टेबिलिटी पाइले फूड सिक्यूरिटी बूस्ट होला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाइले एमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर रूपे फॉर एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस एंड अदर्स आम गोटे ग्लोबल लीडर पे निजको एस्टाब्लिश कले फूड सिक्यूरिटी बूस्ट होला पॉवर्टी हंगर रिड्यूस होला एसडीजी 1 एसडीजी 2 अचीव करने पे वी आर इन ए वे अहेड डिसएडवांटेज कौन रहा फर्स्ट ऑफ ऑल आम कौन कला एमएसपी दिया इट एक्ट एज ए बैरियर फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गोटे बैरियर होगा कारण केवल राइस उठ बेनिफिट आगे पाइले रीजनल डिस्पारिटी वाइडेन है लोक कहले से खाली चाष करके बचुंट ये करें तो किसी पाऊनु आम जहाँ कले तो गवर्नमेंट एमएसपी एत ना बहुत कम एरा किए कर लैक वाइडेनिंग रीजनल डिस्पारिटी थर्ड वन ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट व्हाट इज द फोर्थ वन फाइनेंशियल बर्डन पर आउ कौन फाइनेंशियल बर्डन सहित आउ कौन है ओवर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन जो होची ओवर प्रोडक्शन हेल्ले कौन होची फूड वेस्टेज होची फूड वेस्टेज हेल्ले कौन हम दिस इज वन टाइप ऑफ करप्शन बिकॉज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री whether it is natural resources or anything
आउ कौन हो एमएसपी रो इश्यू अच्छी एमएसपी रो बेनिफिट हार्डली देयर इज इनएफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशनल लैकुना एमएसपी रो बेनिफिट से लोक पाई पारन जति लोक पाइबा कथा irregularity in receiving the benefits of MSP irregularity rahila so these are the thing next what we are going to discuss is MSP mu tum kahi sarchi income stability inequality market dynamics aji rate बढ़ी जाउची तो गोटे प्राइस स्टेबिलिटी दबो तांको ओके नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेबा एड्रेस रूरल पॉवर्टी मु कहि छि पॉवर्टी हंगर को रिड्यूस करियो एमएसपी खाली लोकन खाया को मिललानी आज के रेट रे एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत आगु गलानी हमर इंडिया रे निजर खाया पिया पे खाली लोक एग्रीकल्चर करनांती पतन बिका होची एक्सपोर्ट होची बासमती राइस कहली मिडिल ईस्ट कंट्री को दिया होची ओके नेक्स्ट आसला द टुडे टॉपिक वेदर एमएसपी वेदर लीगल बाइंडिंग ऑफ एमएसपी इज ए फिजिबल ऑप्शन for a developing country like India question आसी पारे GS3 रे very very vital MS को legalize करे पई developing country India पई एटा feasible की whether it is feasible or not let's explore first one is high fiscal cost obviously यदि MS को आज legalize कराउची भाबो 7.5 लाख करोड़ annually गवर्नमेंट ऊपर माने एति टका जीवो भाबो गवर्नमेंट राजकोष जीडीपी रो केते परसेंट नबो 17% ऑफ द यूनियन बजट हमर गोटे अछि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गोटे अछि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे कोन तमर सैलरी फैलरी जा पाइले गवर्नमेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन गला कैपिटल एक्सपेंडिचर कोन आमे जते इंफ्रास्ट्रक्चर बनैबा आमे यदि 17 एमएसपी लीगलाइज कला परे यदि 17% पळेला एतिरे आमे तो पैसाटा कोन बे पैसाटा द प्राइमरी फोकस ऑफ ए डेवलपिंग नेशन इज टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम जिते बढ़ाइबो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ ना इन द लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट इन द लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट हो आ आमे दे एतिरे एते पैसा खर्च करिया देशर अवस्था कोन हो जो विकसित भारत 2047 रो नारा दिया होची 5 ट्रिलियन जीडीपी आर अवस्थाटा कोन हो okay next direct compensation model implementing a compensation mechanism for the price difference would require 30,000 to 50,000 crore annually which is financially more viable से कहबा कथा कि आमे 7.5 लाख करोड़ करिया बदल रे जो जेति की प्राइस कमुची जेति की लॉसेस होची आमे ताको कंपेंसेशन करि परिया सेति पे मात्र 30 रु 50,000 कोटी टका दरकार annually that can be given that is viable that is economically viable third one is market intervention establishing floor price okay APMC रे कोन ऑक्शन ने फ्लोर प्राइस डिसाइड करा can stabilize market price and reduce the burden on government procurement private आमे वर्तमान कोन कह जी पीपी मॉडल अडॉप्ट करा पे कह जी प्राइवेट सेक्टर रोल mandating private buyers to ensure purchase at or above MSP could distribute financial responsibility across the stakeholder reducing load on the exchequer कहर मीनिंग होची एबे खाली गवर्नमेंट ही किनुची एमएसपी रेट रे यदि गोटे क्लियर कट फ्रेमवर्क गवर्नमेंट आनिबो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आसीबे प्राइवेट प्लेयर भी अवेलेबल हेबे कोन करे पे किनिबा पे तांकोटू ताले गवर्नमेंट पर जो फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट भाबो कि ताकू दान गम किनिया पे 50,000 कोटी टका खर्च होतला वर्तमान सेतु अधा किनिदेला प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा दे किनिथिबे 20,000 कोटी से किनले ये 30,000 कोटी किनले तो फाइनेंशियल बर्डन भी कोन होला रिड्यूस होला देन देयर शुड बी इंटीग्रिटी पैक्ट एटा टेलीग्राम रे अवेलेबल हो जिवो ओके टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल हो जिवो ओके रेजलाइन ओके तो हमर कोन होची इंटीग्रिटी पैक्ट भी रहया दका तमे भाई जदी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो वर्तमान हमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे बेसिक दिन कोन मंडी रे मिडिल मैन इश्यू एमएसपी रे मिडिल मैन इश्यू लिखि परिबो एतरे मिडिल मैन इश्यू लिखि परिबो से मन ठकी रे आउछंती कटनी चटनी करूछंती हैला 10 टका माने धान को कहंती क्वालिटी कम तुमको पैसा कम मिलियो किंतु क्वालिटी भलो थिबो करप्शन भी होउची तो से सब दिन से कोन करे दरकार वर्तमान हां कोन कहतली तो से इंटीग्रिटी पैक्ट भी रहया दरकार भाई जो माने भी आछे ना ऑनेस्टी मेंटेन करिवो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिवो प्रोक्योरमेंट थ्रू द प्रोक्योरमेंट इंटीग्रिटी पैक्ट एथिक्स रे भी अछि इंटीग्रिटी पैक्ट माने कोन
गवर्नमेंट सहित जो मैंने काम करेंगे दे विल साइन एन एग्रीमेंट दैट ऑल द ऑपरेशंस should be carried out through the principle of transparency, accountability, honesty and probity. यही सब जिनसे मेंटेन रहे तांका ऑपरेशन रे आज टाटा को कम समझते भलो कहते ड्यू टू हाई इंटीग्रिटी पैक्ट करप्शन नहीं ट्रांसपेरेंसी अच्छी वैल्यू टू द सोशल मेकानिज्म ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री आम पाखे लोक पाखे पैसा नहीं 10 टंका ही आम सल्ट अवेलेबल करूँ टाटा सल्ट visionary leadership, long-term vision. Deficit payment scheme, compensating farmer for the difference between market price and MSP can ensure without the need of a direct procurement of all crop. जेतिकी गैप रहुची MSP जी किना कथा आ मार्केट जेति गैप रहुची आमे सेही गैप को कोन करि परया विभिन्न पेमेंट स्कीम रे देई परया काको फॉरेनर सॉरी हमर फार्मर मन बुझी पारलो लीगलाइज एमएससी करे फले हाई फिजिकल कॉस्ट पड़ी परिबो अगेन आहुरी रीजनल डिस्पैरिटी फर्दर वाइडन हबो आजिका डेट रे इंडियन एग्रीकल्चर रे सबुठ बड़ प्रॉब्लम कोन लैक ऑफ क्लाइमेट सफिशिएंस इरेटिक क्लाइमेट इरेटिक मानसून क्लाइमेट वायबल एग्रीकल्चर केतटा अछि किछि नै एबे मिलेट गोटे धार से ड्रॉट कंडीशन रे होई परिबो वाटर रिक्वायरमेंट एते नाही से भलिया क्रॉप बर्तन कल्टीवेट बारे इंडिया रे मु बारंबार कहू देयर शुड बी ए प्रैग्मेटिक शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देयर शुड बी ए पैराडाइमिक शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया आईएमआर बहुत अधिक शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु लक्षाधिक पिला मरुछन मां मृत्यु घटुची ह्यूमन रिसोर्स ड्रेन होची मालन्यूट्रिशन को आम जहाँ खाऊे एते तो विटामिन नाही जीडीपी लॉस 4% होची मालन्यूट्रिशन जोगु प्रोडक्टिविटी लॉस 80% होची गवर्नमेंट रो ह्यूमन रिसोर्स डेटोरेट होची डेमोग्राफिक बर्डन बढ़ुची लिमिटेशन बजेटरी स्ट्रेस पड़ी पारे पिला माने मार्केट डिस्ट्रक्शन हबो ओके एमएसपी माइट डिटर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट ओके एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज कारण एते टोटल लक्षाधिक चाषींकर डाटा फैक्ट सब रहा पड़ो लीगली बाइंडिंग है माने दैट इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज नेक्स्ट रीजनल इनइक्विटी ऑब्वियसली मु कहि चरची करंटली एमएसपी प्रोक्योरेंट डिस्प्रोपोर्शनलिटी बेनिफिट को स्टेट को पंजाब हरियाणा यूपी आउ अलग माने एते किछि बेनिफिट पाउनांते रिस्क ऑफ ओवर प्रोडक्शन लीगलाइज करदेले कौन से जानदेले कि आमको एतिक पैसा मिलबार है वर्ल्ड रे कहीं भी काटी पारे ओवर प्रोडक्शन हम ओवर प्रोडक्शन हेले जेतिक दरकार सेतिक तो दिया हम बाकी जिन आइदर जब एक्सपोर्ट है ना नष्ट हम वेस्टेज हम फूड वेस्टेज इज अनदर पैरामीटर ऑफ करप्शन बिकॉज इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ ए कंट्रीज रिसोर्सेज ओके ओ फॉरवर्ड कौन करे दरकार टारगेटेड प्रोक्यूरमेंट ओके कौन कौन बर्तमान पल्सेस ऑयल सीड मिलेट को करा जबार आवश्यकता अछि एमएसपी रे नेक्स्ट वन इज एपीओ स्ट्रेंथनिंग ओके एम्पावरिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एपीओ जानजो ग्राउंड लेवल रे से माने सब दिन प्रोक्योर करंती ओके तांकु स्ट्रेंथन करे आवश्यकता अछि स्ट्रेंथनिंग एपीएमसी मार्केट स्ट्रेंथनिंग ई नाम मेकानिज्म डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नाम तुमको एबे कहउतली ई नाम मार्केट रिफॉर्म एपीएमसी ऑलरेडी तुमको कहूची अवेयरनेस कैंपेन आउ कोन करे दरकार एग्रो प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करे दरकार गवर्नमेंट बुझिबे ना बुझिबा ना एग्रो प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप जेते बूस्ट करि परिबा पाळ को यूज करी कि धान गदारे जहाँ भी बाहर तुम वेस्ट तक ताकू केंती वेल्थ रे कन्वर्ट हम से जिन गवर्नमेंट करिया दरकार ओके ध्यान देवा दरकार नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पिला माने इंडस वैली स्क्रिप्ट कौन पाई ये न्यूज आसला मेन पर्सपेक्टिव यार कौन इंपोर्टेंस केमती यूज करिया विल सी फर्स्ट इज इंडस वैली स्क्रिप्ट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ऑफर $1 million prize for anyone who decipher Indus Valley script serves as a purpose
beyond solving the engineering mystery regarding the 5,000-year-old civilization. तुम जानी जाओ Indus Valley civilization script, the script of Indus Valley civilization has not been deciphered. Deciphered जाइए एटा को अप्रोच रे बोस्टरफोर्डन अप्रोच रे को बोस्टरफोर्डन माने फास्ट लगा तो राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट. Indus Valley civilization no main perspective रे art and architecture, evolution of art and architecture from ancient times. लेखियो तुम सेठी सील केमति थिला ट्रेड कोन सिग्निफिकेंस हमें देखिबा. सिग्निफिकेंस कोन Indus Valley civilization okay featuring undeciphered symbol हम जानि छे. okay material सेठी कोन होय छे स्टीटाइट सील यूज होची. okay clay impression, pottery, bronze tools, okay stone wares, bangles. आमर एटी इंपोर्टेंट था कौन ओके कौन कोड़ जीवजंतु को मन देखा ये रे यूनिकॉर्न, बुल्स, टाइगर, एलिफेंट, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स. तो आमर एटी जाना था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिग्निफिकेंस कौन इट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. इट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाटर मैनेजमेंट. अर्बन डेवलपमेंट जानछो सेठी पूरा क्लियर कट कौन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर थिला डेडिकेटेड स्ट्रीट ये सब नो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. वाटर मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, धोलावीरा. हाईली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. ट्रेड, religious tolerance, it act as it laid the foundation stone of civilization. हाँ तुम्हें सिग्निफिकेंट नहीं जानछ मोहनजोदारो कौन मिली ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्यानरी. नेक्स्ट लोथल रोज कौन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड. धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट आ कौन इंपोर्टेंट जिनस ब्रोंज डांसिंग गर्ल. दिस इज वेरी वाइटल पिला माने मु काहे केटा पिकअप कली आमे देखिबा. विल हैव ए थरो ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके आमे एटा मु टॉपिक कोन पे नीची. ओके पछला यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनबिल्ड द यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 व्हिच इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म in the appointment of vice chancellor or academic staff aligned with national education policy NEP 2020. NEP 2020 is very vital for revolutionizing the educational ecosystem in India. Educational ecosystem को revitalize करया पाई in order to establish India as a global economic hub. NEP has been framed. NEP frame है जी implementation हो जी बर्तमान. आज it is a concurrent subject. तो धीरे धीरे कंट्री माने कौन करूछंती सॉरी हमर स्टेट माने कौन करूछंती इंक्लूजन करूछंती. तुम जानि जो ओडिशा गवर्नमेंट भी बर्तमान डिक्लेयर करछि कोन एनईपी रो फुल इंप्लीमेंटेशन हो. फुल इंप्लीमेंटेशन होबाक जाउछि. देखिबा एटा को हम कोठी यूज करि परिबा. प्रथम हला एजुकेशन रे जदि आसला एजुकेशन सेक्टर अछि हेल्थ आ एजुकेशन तुम जानि जो एजुकेशन सेक्टर तुम लिखि परियो गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ओके यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 आमे आउ कोड यूज करिया मु कहू छी. ओके बीसी अपॉइंटमेंट के रिवैल्यूएशन होबा जाउची. अथॉरिटी फॉर सिलेक्शन चांसलर विजिटर्स कैन बी एम्पावर्ड टू ए 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी गोटा हबो. ओके फॉर अपॉइंटिंग बीसी. ओके दीज आर ऑल द ड्राफ्ट गाइडलाइंस. आमे देखिए बता ना आमे को कोड यूज करिया वेयर वी आर गोइंग टू यूज. देखो very very important कहीं कहू छी. देखो प्रथम है हाइलाइटिंग द लेटेस्ट ड्राफ्ट रेगुलेशन कौन सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी
कौन है कैंडिडेट कैन टीच बेस्ड ऑन देयर हाईली एकेडमिक स्पेशलाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री और कौन नेट फोकस सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी आस एक्सपांडेड वाइस चांसलर कौन एलिजिबिलिटी इंक्लूसिव फोकस एट इंपोर्टाट ये वर्क कल्चर भी दे पार एग्जांपल ऑफ गुड वर्क कल्चर एथिक्स जीएस पेपर 4 जीएस 4 कौन रिलैक्सेशन फॉर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू कैटेगरी along with OBCs with the emphasis on Indian language in academic bridging language disparity को ब्रिज करिवो गुड वर्क कल्चर इनोवेशन को भी रिकॉग्नाइजिंग इनोवेशन एज वेल एज इंक्लूसिविटी फोकस गुड वर्क कल्चर दे पारे एटा को रिवाइज राइवलरी एंड स्पोर्ट्स कौन रोल दी तीन जिन आम दे पार प्रथम आपको वर्क कल्चर दे पार यूजीसी कौन लिखा यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन इंक्लूड इंक्लूसिव फोकस एंड रिकॉग्नाइजिंग इनोवेशन गुड वर्क कल्चर जो वर्क कल्चर रे कौन वर्क कल्चर माने कौन तुम गोटे ऑफिस रे काम करूछ सेठी रूल्स कौन रेगुलेशन कौन एम्प्लॉय केमती ट्रीट कराई ऑल दी थिंग्स टोटली कॉन्स्टिट्यूट वर्क कल्चर डिसीजन मेकिंग केमती टॉप डाउन होची कि बॉटम अप होची एम्प्लॉय मान को सफिशिएंट गूगल वर्क कल्चर समस्त एग्जांपल दोन कारण गूगल रे जो माने काम करूछंती तांको जिम पई भी समय अछि छुट्टी भी मिलुची वीकली एबे आउ कोन वर्क कल्चर एग्जांपल दे परियो सबु बढ़िया एग्जांपल होची मेंटुरल लीव बाय द ओडिशा गवर्नमेंट दिस इज ए सिंबल ऑफ गुड वर्क कल्चर यदि वुमेन माने काम करूछंती तांकर एटा हमर कोन गोटे गुड वर्क कल्चर सिंबल जीएस पेपर 4 वर्क कल्चर से दे पार द रिसेंट डिसीजन ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट टू हैव 1 डे मेंटुरल लीव ओके फिफ्थ वन इज अबाउट उमरेद पाउनी करहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा कोन पे आसी हम देखिबा कॉन्टेक्स्ट रे ओके फर्स्ट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट टुक सुओमोटो कॉग्निजेंस सुओमोटो कॉग्निजेंस व्हाट इज सुओमोटो आसला माने कोन ओडिट जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म तमे जो लिखुछो रोल ऑफ इंडियन जुडिशियरी इन प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 ए रे भी अछि एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन करिया एटा एग्जांपल लिखि परिबो जुडिशियल एक्टिविज्म रे जेमति कि मझिरे जुडिशियल एक्टिविज्म कोन कला गवर्नमेंट जे तमे सेक्स वर्कर मानन को फूड ग्रेन खाइबा को दियो तार कथा बुझो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तला जुडिशियल एक्टिविज्म दिस इज आल्सो जुडिशियल एक्टिविज्म सुओमोटो ओवररीच रे कोन तमे ओवररीच मीन देयर इज वायोलेशन ऑफ एसओपी सेपरेशन ऑफ तमे जन को डोमेन भीतर को पसी जाउछो एक्टिविज्म कले तमे सोशल जस्टिस वल्नरेबल सेक्शन को राइट को प्रमोट करछो राइट को डिफेंड करछो इट इज द जुडिशियरी दैट इज द कोन प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ताले टुक सो कम्युनिकेशन ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग टूरिस्ट माने कोन करछंती ओके बुलाबुली करछंती ओके आ तंग एई जो हमर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटी से माने बुलाबुली करछंती एक्सपोजिंग लैप्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल तुम जानिचो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बर्तमान दिन दिन गोटे वाइटल रोल बर्तमान देखा इलीगल पोचिंग इलीगल हंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द लोकल पीपल lack of animal corridor lack of loop there is very very much loophole in the legal measures low conviction rate जो मान धरा पड़ुछन तांको कन्विक्शन हाचु गोटे बच्चा 25 वर्ष जेंती लागुची पोर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एई सब दिन आप कौन कर मिलूनी लोक जो मैंने धरा पड़ुछंती जहाँ भी किए गला चोरी की नहीं गला किए गला कौन कला ओके लोक जदि आमर जो लीगल मेकानिक ताको जदि स्ट्रेंथन होता अवेयरनेस जदि बढ़ता जदि डेडिकेटेड एनिमल पाथ रहता एनिमल कॉरिडोर रहता ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता
हंतानी तो आम जा ओके तो देखा पे ओके आर एटा प्रिलिम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट ओके मेन पर्सपेक्टिव मुझे किसी जिन अलरेडी ब्रेन स्टॉर्मिंग तुमको कहली कौन जे कौन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आजिका डेट रे कौन कौन इश्यूज रोचे डेडिकेटेड एनिमल कॉरिडोर नहीं लोकल अवेयरनेस नहीं पॉलिसी गैप रोची लो कन्विक्शन रेट रोची लोकेशन एटा कोठी अछि पिला माने भंडारा डिस्ट्रिक्ट एंड उर्मिद कोही भिलवारी तालुका नागपुर महाराष्ट्र एटा अछि ना आउ कहा तो एटा लिंक हे अछि ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ओके महाराष्ट्र वाया द फॉरेस्ट अलोंग द ओई गंगा पेनगंगा ओई गंगा तुम जानी छ ओके फॉर्मिंग ए क्रूशियल टाइगर कंजर्वेशन कॉरिडोर को रिवर आज ओई गंगा रिवर को डैम गोस खुर्द डैम क्वेश्चन प्रिपेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उमृत कराहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट देखिया हमर पांचटा क्वेश्चन सब दिन पिला माने आछि जेतले टॉपिक सरीबो सब दिन पिला माने डेली 8टा रे ओके ऑलरेडी बहुत सारा करंट अफेयर क्लासेस भी हेची 24 डिसेंबर रु हेलानी तमे देखो छे वीडियोग्राफ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अवेलेबल अछि ऑलरेडी ओके 24 डिसेंबर रु हेची ईच क्लासेस रे तमे तम मुंडोटा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हबो बहुत सारा बेनिफिट हम समस्त कहबी जाई से वीडियोग्रा देखो कंटीन्यूअसली जो 10 ରୁ 15 दिन ऑलरेडी हेची से वीडियोग्रा देखो ईच करंट अफेयर क्लास अटेंड करो ओके Which union ministry is responsible for the inauguration of India first organic fishery cluster जो सिक्किम रही को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हजबेंड्री एंड कौन डायरिंग मन रखियो कोठी होची सिक्किम रे कोठी सिक्किम नेक्स्ट उमृत कराहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोठी होची पिला माने महाराष्ट्र हमें भी पढ़थले थर्ड वन इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द भारत पोल पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री कौन एटा रियल टाइम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जोटा इंटरपोल सहित एमती एक्सचेंज हो पारे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हाउ मेनी क्रॉप्स आबे मिनिमम सपोर्ट प्राइस केते डिक्लेयर करछि 23 टा जानि नेक्स्ट व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विथ द उर्मित कराहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओई गंगा ओके तुम कहि ऑलरेडी पिला माने आज हमें बहुत सारा इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कले मु खाली थरो माने इन ए समराइज फॉर्मेट कौन कौन हम एक्सप्लेन कले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट एंड इन द सेकंड आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स रिगार्डिंग एमएसपी and in another article we have discussed what will the impact of legalizing MSP whether it is feasible for India or not what can be the way forward we have discussed and regarding UGC guideline we have extracted some points which can be directly applied to work culture which can be given as the example of a work culture GS4 I have also explained another example of a good work culture that is 1 day menstrual leave of Odisha government women man pe next we have also discussed about Urmit Karahandala wildlife sanctuary of Maharashtra and I have already explained what are the lacunas what are the concerns what are the gaps in wildlife conservation measure in India so these are the today's point of discussion I hope you are getting benefited of this in my class there will be totally brainstorming from prelims perspective view, from main perspective view, we try to generate points. What is the basic aim of this class is to interlink and application of current affairs in your GS paper. How to apply? केन दे में apply करिया ई दिन छोरा को current affairs देखु जे समस्त जानले कि ओडिशा गवर्नमेंट गोटे दिन पई मेंट्रुअल लीव घोषणा कला का पई वुमेन मान पई किंतु केते जण जानले कि सेटा को वर्क कल्चर ही लेखा जीवो केते जण जानि परले कि सेटा को वर्क कल्चर एग्जांपल लेखा जाई परिबो ओडिशा गवर्नमेंट मझिरे गोटे निष्पत्ति निदिला कोन सब ड्राइवर मान को कोन जो रास्ता रे जाउछंती तांको चाहा दबो सेटा को गुड गवर्नेंस रे लेखा जाई परिबो सेटा को एथिकल गवर्नेंस तुम लिखि परिबो सेटा को कोड लिखि परिबो जेतले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी जीएस3 रे अछि तमरो
सेठी गवर्नमेंट इनिशिएटिव रे पैसा दे पारे रोड एक्सीडेंट रोकिया पई दिस इज वेरी वाइटल तांगुटे चा फा दलो तांगुटे रेस्ट दलो so this is all about today's current affairs class पिला माने पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे जय जगन्नाथ पढ़ा पढ़ी जारी रखंतु माइंड सबले ओपन माइंड शुड बी ओपन फ्लक्चुएशन फ्री गुड मॉर्निंग mind should be open fluctuation free mind should have inclusivity in decision making there should be clarity in your decision clarity is crucial for increasing efficiency for increasing productivity and for achieving your aim ठीक है तो आज पे पिलाने थी थैंक यू पुणी देखा काली सकाल 8टा ओके आमर सब दिन सकाल 8टा मु समस्त कहबी जाकि स्टार्टिंग रु जेते भी क्लासेस छै सब वीडियो देखो ओके आ कॉलिंग ओवर विषय गोटे वीडियो मु करिछि पाइक रिबेलियन ऊपर है ऑलरेडी गोटे क्लासेस नै छी अवेलेबल अछि तमे से वीडियो करा भी देखि परिबो यू कैन एक्सप्लोर न्यू पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लोर कि हां एटा को एट की भी यूज करियो कॉलिंग ओवर को भी सोशल रिफॉर्म सोशल बेसिस ऑफ ओडिशा नेशनलिज्म रो यूज करियो आमे ओडिया आमे सही कॉलिंग ओवर रो कोन मुख चाकी पाइक रिबेलियन को भी सोशल बेसिस ऑफ ओडिया नेशनलिज्म यूज करियो दीज आर द व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज interlinking of subject application of one thing in another thing that can be viewed as a value addition okay thank you